Dear friends, today I will discuss a tax planning for non-resident from capital gain in India. तो अभी तक हमारी अंडरस्टैंडिंग रहती है कि इंडिया में अगर कैपिटल गेन अराइज हो रहा है इट विल बी टैक्सेबल वेदर इट्स accruing टू द नॉन रेजिडेंट और अ रेजिडेंट। यहाँ पे एक लीगल लूप होल है जो मैं आपसे डिस्कस करूंगा दैट विल हेल्प यू इन प्लानिंग फॉर द नॉन रेजिडेंट फॉर कैपिटल गेन। जब भी मेरे पास आइदर नॉन रेजिडेंट का टैक्सेशन इन्वॉल्व होगा और मेरे पास या फॉरेन इनकम इन्वॉल्व होगी, मींस मेरे पास या तो फॉरेन इनकम है या मेरे पास नॉन रेजिडेंट है, इन दोनों सिनेरियो में फॉर टैक्सेशन इन इंडिया वी हैव टू रिसॉर्ट टू द डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट। अब यहाँ पे एक लीगल पोजीशन हमको समझनी है, इनकम टैक्स एक्ट वर्सेस डीटी डबल ए। तो हम पहले ये पोजीशन समझते हैं, फिर वो टैक्स प्लानिंग क्या चीज है फॉर नॉन रेजिडेंट, देन आई विल डिस्कस। एज पर एस्टेब्लिश लीगल प्रेसिडेंट, सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट है आजादी बचाओ आंदोलन, विच सेज सेक्शन 90 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट टेक प्रेसिडेंस ओवर सेक्शन 4 चार्जिंग सेक्शन ऑफ द एक्ट। अभी सेक्शन 90 हमारा क्या बोलता है? सेक्शन 90 among other things empower government to enter into DTA with other countries. Means section 90 में Indian government can enter into DTA with other country. अब इस पहले प्रोविजन का मतलब क्या हो रहा है? It means DTA provision will override the explicit provision of Income Tax Act. How the DTA provision will override the explicit provision of Income Tax Act, इसको समझने के लिए हमें थोड़ा सा एक फॉरेन टैक्सेशन का कॉन्सेप्ट गो थ्रू करना पड़ेगा, देन वी विल बी एबल टू अंडरस्टैंड हाउ DTA override the provisions of Income Tax Act. With reference to foreign taxation, there are two concepts: source based taxation and residence based taxation. ये क्या चीज होती है? सोर्स बेस्ड टैक्सेशन का मतलब country where income is generated or source get right to tax that income irrespective of residential status of person. ये जनरली इनकम टैक्स एक्ट में प्रोविजन है, सेक्शन 9 रेजिडेंशियल स्टेटस। मींस सोर्स बेस्ड टैक्सेशन क्या हो रहा है? इट्स अ कंट्री वेयर इनकम इज बीइंग जनरेटेड और सोर्स गेट्स राइट टू टैक्स इनकम। एक कॉन्सेप्ट है रेजिडेंस बेस्ड टैक्सेशन, country where a person is resident gets a right to tax income wherever is income generated. मीन्स अगर एक इंडिविजुअल की हम बात करते हैं, एक इंडिविजुअल एक कंट्री का रेजिडेंट है, then as per our common understanding his global income is taxable in the country where he is a resident. So these are two concepts: source based taxation and residence based taxation. अब DTA among other things provide for the following two aspects. It allocates taxing rights between two countries. Right is either given to source country, a resident country or both. मीन्स अगर एक इनकम जो जनरेट हो रही है, एग्जांपल लेता हूँ, से इनकम इंडिया में जनरेट हो रही है, इट मीन्स DTA कैन गिव राइट टू टैक्स दैट इनकम टू इंडिया, or else it can give right to tax that income to resident country only, or else DTA can give right to tax that income to both the countries. Hence DTA allocates taxing rights between two countries. What else? If it provides for taxation relief of doubly taxed income, means where income is taxable in both source country and a resident country, then residence country is mandated, is obligated to give relief of tax paid in a source country. मीन्स अगर कोई इनकम दोनों जगह टैक्स हो गई, फॉर एग्जांपल लेते हैं, इंडिया में एक फीस फॉर टेक्निकल सर्विस एक नॉन रेजिडेंट को अराइज हुई। नाउ एज पर जनरल बोल रहा हूँ, एज पर जनरल प्रोविजंस DTA allocate taxing rights on FTS, fees for technical service, accruing to the non-resident from India to India as well as to the respective resident country, and then it required the resident country to give relief
of the tax paid in India out of the tax payable in a resident country. तो डीटीए दो चीज में काम करता है, इट एलोकेट टैक्सिंग राइट्स एंड इट प्रोवाइड फॉर टैक्सेशन रिलीफ ऑफ डबली टैक्स इनकम। अब हम दोबारा से समझने की कोशिश करते हैं हाउ डीटीए प्रोविजन ओवरराइड एक्सप्लिसिट प्रोविजन ऑफ इनकम टैक्स। एक एग्जांपल ले रहा हूं, इफ डीटीए विद एनी कंट्री does not allocate, say, taxation of capital gain accruing in India from transfer of capital asset in India to a non-resident, means DTA for example लेते हैं कि से यूएसए का एक रेजिडेंट है, ही ट्रांसफर अ कैपिटल एसेट इन इंडिया, तो इंडिया में उसको क्या राइज हुआ, कैप गेन राइज हुआ। नाउ इट्स अ सोर्स बेस्ड टैक्सेशन। सोर्स बेस्ड टैक्सेशन क्यों है, बिकॉज ये कैप गेन कहाँ राइज हो रहा है, इंडिया में राइज हो रहा है। अब यहाँ पे अगर इंडिया यूएसए की डीटीए फॉर एग्जांपल डज नॉट गिव इंडिया राइट टू टैक्स दिस कैपिटल गेन, then despite charging section 4 and section 9 हमारा क्या होता है, डीम एक्रूअल ऑफ इनकम। तो despite charging section and accrual of income in India, India cannot levy tax on such capital gain. In this way, DTA overrides the explicit provision section 4 charging section और section 9 accrual of income in India, जो दोनों section indirectly India को power दे रहे हैं to tax source based income, but that power gets subsided or gets overruled by DTA if DTA does not allocate taxing right on such capital gain to India. This is how a DTA overrides the explicit provision of income tax. तो अभी हम लोगों ने ये समझा लीगल पोजीशन इनकम टैक्स एक्ट वर्सेस डीटीए। अब हम मेन कॉन्सेप्ट पे आते हैं जो मेरे थीम है कि हाउ वी कैन मेक how we can do planning for a non-resident with reference to tax capital gain. DTA provision with reference to capital gain. इन तीन कंट्री सिंगापुर, मॉरिशियस और यूए, इन तीन कंट्रियों के साथ इंडिया ने डीटीए करा हुआ है। मैंने अब इन तीनों कंट्रियों को यहाँ पे एक नाम दे दिया, स्पेसिफाइड कंट्रीज। अब ये डी इन तीनों कंट्रियों का डीटीए विद रेफरेंस टू कैपिटल गेन क्या बोलता है। हम अभी इंडिविजुअल की बात कर रहे हैं, एंड क्या बोलता है, इंडिविजुअल इज रेजिडेंट ऑफ आइदर ऑफ स्पेसिफाइड कंट्री, मींस इंडिविजुअल या तो सिंगापुर का रेजिडेंट है या मॉरिशियस का या यूएई का रेजिडेंट है। अब यहाँ पे डीटीए में हमें एक स्पेशल चीजें ध्यान रखनी है कि अ पर्सन शुड बी रेजिडेंट बट ही शुड सेटिस्फाई द प्रिंसिपल पर्पस टेस्ट। It means he should not be a resident only for the purpose of claiming tax benefit. If that be the case, then individual will not be treated as a resident of that specified country for the purpose of DTA. And we have to keep in mind limitation of benefit clause if any. टेक्निकल कॉन्सेप्ट है, इस पे मैं ज्यादा डिबेट नहीं कर रहा हूँ। अब एक सिंपल मैं आपको एक चीज समझाना चाह रहा हूँ। तो प्रोविजन ऑफ डीटी ऑफ दीज कंट्रीज विद रेफरेंस टू कैपिटल गेन हम कैसे समझना चाह रहे हैं, बुलेट पॉइंट के थ्रू। एन इंडिविजुअल इज अ रेजिडेंट ऑफ द आइदर ऑफ स्पेसिफाइड कंट्री, कैपिटल गेन इज accruing to a such resident from transfer of immutable property in India and shares of Indian company. उसको कैपिटल गेन किस चीज से अराइज हो रहा है, तो ट्रांसफर ऑफ कैपिटल एसेट से, इमूवेबल प्रॉपर्टी इन इंडिया एंड शेयर्स ऑफ इंडिया। सच कैपिटल गेन एक्रूइंग इन इंडिया, डीटीए एलोकेट्स टैक्सिंग राइट। और अगर उन नॉन रेजिडेंट को या रेजिडेंट ऑफ स्पेसिफाइड कंट्री को कैपिटल गेन इंडिया से अराइज हो रहा है फ्रॉम ट्रांसफर ऑफ अदर कैपिटल एसेट, means other than immutable property and shares of Indian company, then such capital gain will not be taxable in India because in countryयों का DTA does not give taxing rights to India to tax the capital gain arising from the transfer of other capital assets. तो ये तीन कंट्रियों के डीटीओ में ये स्पेशल प्रोविजन है हमारा विद रेफरेंस टू द कैपिटल गेन।
अब यहाँ पे हम लोग जो टैक्स प्लानिंग की बात कर रहे हैं, व्हाट विल हैपन इफ कैपिटल गेन arises from transfer of units of mutual funds. तो पॉइंट ये आता है whether unit of mutual fund is covered under the definition of what shares or not. अब डीटीए में एक इंटरप्रिटेशन आर्टिकल रहता है, दैट इज आर्टिकल 3. तो आर्टिकल 3 जस्ट लाइक सेक्शन 2 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट gives the definition to the words used under DTA. But if any word is not defined in DTA, then DTA empowered to define the word as per definition of word given in the tax law of the country applying the DTA. Now, if India wants to understand whether the mutual funds are covered under the ambit of shares or not, then India has to resort to the Indian Income Tax Act to understand whether mutual funds are covered under shares or not. The word share is not defined in the DTA, hence the word shares connotation meaning has to draw from Income Tax Act. Under Income Tax Act, there is a different tax treatment for sale of shares and sale of units of mutual fund, implying that Indian statute treats shares and units of mutual fund differently. मीन्स एक इंटरप्रिटेशन है सिंपल सी कि जब इंडिया सिंगापुर यूएई मॉरिशियस से ट्रीटी नेगोशिएट कर रही थी, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम इंडिया में टैक्सेशन लॉ इज अ डिफरेंट फॉर फ्रॉम ट्रांसफर ऑफ शेयर्स एंड ट्रांसफर ऑफ म्यूचुअल फंड्स. है जब उन्होंने यहाँ पे डीटीए में सिर्फ शेयर्स वर्ड यूज करा है, इट वाज अ क्लियर इंटेंशन ऑफ द इंडियन गवर्नमेंट not to cover the mutual funds because Indian taxation laws treat the taxation of this transfer of shares and transfer of mutual fund differently. Hence, the word share do not cover with this ambit the units of mutual fund. Thus, capital gain accruing to the resident of specified countries from transfer of units of mutual fund in India, the same will not be taxable in India. And if such gain is also not taxable in a specified country, then such capital gain will be entirely tax-free. And this is the tax planning for a non-resident from a capital gain accruing in India. Now in India, stock market is booming. So if a non-resident, or rather I can say, if a resident of these countries invest in a mutual fund and earn a capital gain, then that capital gain will not be taxable in India because in a booming share market, both shares as well as stock market is flourishing. Shares and the mutual fund market is flourishing, giving handsome returns. And if they invest in a mutual funds, then their capital gain will not be taxable in India. And if such gain is also not taxable in their resident country, then such capital gain will be the entirely tax free. So this is my simple tax planning for non-resident from a capital gain in India. Hope आपको ये concept clear हुआ होगा, अच्छा लगा होगा. Thank you.